last class, we have discussed about the period of deformation and period of restitution. So what is the meaning of period of deformation? Means जब आपकी दो बॉडीज कांटेक्ट बनाती हैं फर्स्ट टाइम और जब तब तक मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होती है, ठीक है, the time between point contact to maximum deformation is known as period of a deformation. What are the period of restitutions? The velocity before the contact, that is v and vb of these two body a and b, and the period of restitution is from maximum deformation to separation, time period between two maximum deformation to separation, and the velocity is v at the time of maximum deformation, because जब बॉडी कांटेक्ट में है तो दोनों बॉडीज की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, दैट इज ए v, एंड आफ्टर द सेपरेशन द वेलोसिटी इज va डैश एंड vb डैश. ये हमने सब कुछ लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. अब उससे आगे स्टार्ट करते हैं. नाउ वी टेक द now now from the last lecture we are going to continue. अब उसको फर्दर आगे लेके जाते हैं. तो दो वेलोसिटीज, दो बॉडीज थे हमारे पास, उनकी जो अलग अलग वेलोसिटी थी जब वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही थी, दैट इज va एंड vb. वेलोसिटी ड्यूरिंग द कांटेक्ट इज v एंड वेलोसिटी आफ्टर द सेपरेशन इज va डैश एंड vb डैश. ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. नाउ वी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए बॉडी ए. तो बॉडी ए है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं. So that is the velocity before the contact, and that is a va. The mass of the body is ma. After the contact, when the body will collide to the second body b, the bodies collide at this point. इस point पर body collide करते हैं, contact बनाती है दूसरी body के साथ. At this time, the second body act a force, a reaction, that is fd, and that is parallel to the line of action. जो भी forces act करेंगे, that is always act on the line of impact, or line of impact पर click करेंगे, and that is a centroid of that body a, that is centroid of body point a, and the mass is ma. हमने body a के ही दो diagrams बनाए हैं, free body diagrams, एक contact collision से पहले और एक collision के दौरान, during the impact. And what is the fd? Fd is a force, impulsive force acted by the body on the body A during the deformation period. जब body deform हो रही थी उस दौरान जो forces लगाया. Now apply the your Newton's second law equation, impulsive force equations for these two conditions. Okay, what is the final momentum? The final momentum is this. That is the final condition during impact. What is the final momentum? Mass into velocity. The velocity at this time of body is v. जो body की velocity है इस time वो कितनी है? v है. ठीक है? That is the final momentum minus initial momentum. What is the initial momentum? The initial momentum condition is this. ये initial momentum condition है. वो कितना हो जाएगा? Mass of the body, and what is the initial velocity? That is the v. The change in momentum is equal to impulsive forces. What is the change in momentum? Final minus initial. Okay? This direction is considered for positive for the velocity. जिस direction velocity positive, उस direction में momentum positive आएगा. इसलिए क्या आपका this momentum is positive in this directions. That momentum is also positive for the change. हम change निकालना है. That minus is m. But
the forces are acting in just opposite to this direction. Forces किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं? इससे अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं. डायरेक्शन फोर्सेस आर एक्टिंग just opposite to the direction of a momentum. Due to this we put a minus. ठीक है, मोमेंटम से अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर हम फोर्सेस को कंसीडर कर रहे हैं. The next thing is, so that is equation A. आपके इक्वेशंस हो गई during the deformation period. Now draw the free body diagram for the restitution period. Now that is a maximum deformation of a body. The body is maximum deformity for the body A, and F are the reaction forces which are acted by the body B on the body A. ठीक है, and is parallel to the line of action. ये भी किसके parallel है? Line of action के ऊपर, line of impact. That is will be act to the line of impact. The mass of the body and A. After the separation, the velocity of the body is V8 s, and the velocity is acting, for example, in this direction. The impulsive force acted by the body B on the body A, changing the velocity from VA to V1 dash. ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा है. फोर्स क्या एक्ट कर रहा है कि बॉडी ए ने बॉडी बी के ऊपर एक्शन लगाया. ठीक है, हमने क्या कंसिडर किया था प्रॉब्लम के अंदर, जब स्टार्टिंग में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, कि जो बॉडी या टू balls are moving in the same directions, and VA is the velocity of the body A and VB is the velocity of a body B. VB is to VB, and the VA is very large as compared to VB. VA क्या करेगा? That will be hit to the this body, that will be collide to the body B. यदि अब इस बॉडी के साथ कोलाइड करेगा तो VA क्या करेगा? इसके ऊपर एक एक्शन लगाएगा ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट. और यदि ये बॉडी ए रिएक्शन लगा रही है तो बॉडी बी क्या लगाएगी? इट विल रिएक्ट द रिएक्शन. इस बॉडी बी ए के ऊपर क्या लगाएगी? रिएक्शन लगाएगी ड्यूरिंग द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट के दौरान. तो बस उन्हीं कंडीशंस के हम अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, और हमें पता चल रहा है, यहाँ पर मैं कंसिडर कर रहे हैं कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है. ठीक है, जब बॉडी कॉन्टेक्ट में नहीं आई तो इससे पहले बॉडी की वेलोसिटी कुछ डिफरेंट थी. ठीक है, जब बॉडी कांटेक्ट में नहीं आई तो वेलोसिटी कुछ डिफरेंट थी, जब बॉडी कांटेक्ट में आ गई तो वेलोसिटी डिफरेंट हो गई है. तो इसका मतलब क्या है? यदि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो डेफिनेटली देयर विल बी ए फोर्स. वेलोसिटी चेंज का मतलब क्या है? द चेंज इन द एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन है तो न्यूटन सेकंड लॉ पिक्चर में आता है, मतलब फोर्सेस पिक्चर में आते हैं. ठीक है, तो क्या हुआ? बॉडी ए की वेलोसिटी क्या थी? बिफोर द कांटेक्ट VA थी, और ड्यूरिंग द कांटेक्ट assume that the velocity is V and that is different from a VA. हमने ये assume कर लिया, और यदि हमने ऐसा assume किया है तो forces लगेंगे, और forces कौन से काम कर रहे हैं? तो यहाँ पर reaction है, that reaction is FR, या यहाँ पर जो reaction आपका force लगा हुआ है FD. तो next thing is, and why these forces FD and FR are different considered? Because हमने यहाँ पर FD consider किया, जो फोर्सेस ड्यूरिंग द कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्स्ट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी फोर्सेस को प्रोड्यूस कर रही है, वो एनर्जी फ्रॉम द डिफॉर्मेशन टू सेपरेशन, एनर्जी वो सेम नहीं रहेगी. तो एनर्जी डिफरेंट है तो फोर्स की क्वांटिटी भी डिफरेंट होगी. ठीक है, यदि ऐसा होता है कि दो अलग अलग फेज के अंदर एनर्जी इक्वल नहीं होगी तो फोर्सेस भी क्या नहीं होंगे, तो जनरेटेड होंगे इस एनर्जी के थ्रू, वो भी सेम नहीं होगी. इसलिए हमने अलग अलग उनको एज्यूम कर लिया, दैट इज द फोर्स इज एफटी एंड दैट इज द फोर्स एफआर. ठीक है, तो नाउ द कंडीशन नंबर 2, जब बॉडी आपकी कांटेक्ट ये बना रही है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन टू सेपरेशन, व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम? The final momentum is mass of this body, of body A, into what the velocity, that is VA dash, the mass into velocity VA dash, a minus what is the initial velocity, the mass, and into a velocity. What is the velocity? Velocity during the impact. इक्वेशन लिख रहे हैं वो ड्यूरिंग द इम्पैक्ट एंड सेपरेशन के बीच में लिख रहे हैं. दैट इज इंपॉर्टेंट.
ठीक है, और यहाँ पर इक्वेशन किस में लिखी गई है, ठीक है, अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर एंड ड्यूरिंग द इम्पैक्ट में लिखी गई है, ठीक है, इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, दैट इज impulsive force. Why this is a minus? Because we assume that this direction is positive for the momentum, ठीक है, and but the forces are acting in different direction, in opposite direction. That is the reason we put the minus. इसलिए हमने यहाँ पर क्या पुट किया, माइनस पुट किया है, and that minus came for the to find the change. चेंज के लिए निकाला है, फाइनल मोमेंटम क्या है, that is a positive quantity. What is the initial momentum? That is a positive quantity, but we are interested in the change. Change के लिए minus आया है. Now, what is the coefficient of a restitution? Coefficient of restitution is the ratio of magnitude of impulsive forces during the restitution period and deformation period. ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि what is the quantity of impulsive forces generated during these two phase. What is the two phase? One phase in which we go from one contact to the bodies to a maximum deformation, and the second phase that is known as the deformation period, and the second phase is in which we go from maximum deformation to separation. So what is the how much the forces generated during the deformation period and how much the forces are generated during the deformation periods. So that is the your restitution periods के दौरान जो impulsive force generate हुए divided by the deformations. ठीक है, put all the values, ठीक है, of this value from the equations, in equation से put किया तो मास से मास चला जाएगा आपका. Similarly, so that is known as the coefficient of restitutions. तो this ratio में impulsive forces generate हुए हैं, ठीक है, जो रेशियो है impulsive forces का in these two phases, that will energy will be in the proportionally to the same, and जो एनर्जी है वो भी क्या रहेगी, proportionally सेम रहेगी. ज्यादा एनर्जी ज्यादा फोर्स जनरेट करेगी, कम एनर्जी कम फोर्स जनरेट करेगी. इसका मतलब क्या हुआ, यदि मान लीजिए ये वैल्यू 1 आ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हमने डिफॉर्मेशंस के अंदर एनर्जी जनरेट हुई, ठीक है, डिफॉर्मेशन पीरियड के दौरान उतनी एनर्जी किस पीरियड में जनरेट हुई, डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड के अंदर जनरेट हुई, ठीक है, और ये देखेंगे तभी क्या आएगा, दोनों इक्वल आएंगे और 1 आएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ. लेकिन मान लीजिए यहाँ पर ये जो नीचे वाली एनर्जी है डिफॉर्मेशन पीरियड जो एनर्जी है वो जो फोर्सेज हैं वो ज्यादा हैं, लेकिन जो रेस्टिट्यूशन पीरियड्स के अंदर फोर्सेज जनरेट हुए इंपल्सिव फोर्सेज या प्रोपोर्शनल एनर्जी वो बिल्कुल कम आ रही है. इसका मतलब क्या हुआ, जो एनर्जी हमें इनिशियली मिली थी उसको हम बाद में कंटिन्यू मेंटेन नहीं रख पाए, दैट विल बी लॉस्ट इनटू द एनवायरनमेंट. वो एनवायरनमेंट के अंदर लॉस हो गई है, ठीक है, या तो हीट की फॉर्म में हो गई है या बस साउंड की फॉर्म में हो गई है, या मटेरियल को डिफॉर्म करने के लिए परमानेंटली डिफॉर्म करने की फॉर्म में एनर्जी क्या हो गई हमारी, लॉस हो गई है. तो नाउ सिमिलरली फॉर द बॉडी बी, ऐसे हम बॉडी बी के लिए इक्वेशंस लिख लेंगे जैसे ऊपर दो इक्वेशंस लिखी थी, एंड वी विल फाइंड द सिमिलर रिजल्ट. बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट पाएंगे, जहां ए है वहां बी आ जाएगा, तो वी माइनस वी बी डैश अपॉन वी बी माइनस बी, we will get the similar equations. तो इन द लास्ट टू इक्वेशंस हमने दो इक्वेशंस अपने फाइंड आउट की. वन इज फॉर द बॉडी ए in the term of coefficient of restitution, and the second equation for the body B. उन equations को यदि हम combined कर लें तो we will find the result is like this: E is equal to minus VB dash minus VA dash, that is the velocity after the separations of a bodies, upon VB minus VA. What is VB and VA? That is the velocity of a bodies before the contact, or you can say that during the approaching each other. We can write down coefficient of restitution is minus velocity of separation of a bodies after the impact divided by velocity of approaching the bodies before the impact, and that is E show the what is the energy loss during the impact. If we get the value of E is equal to 1,
इट मीन्स देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी ना तो साउंड की फॉर्म में लॉस हुआ, ना तो हीट की फॉर्म में लॉस हुआ, ना ही मटेरियल को डिफॉर्म करने की फॉर्म में, मटेरियल को परमानेंटली डिफॉर्म करने की फॉर्म में एनर्जी का लॉस हुआ। If we will get this E की value 0.6 for example, that is the meaning if 6.6 means 60% energy is conserved, 40% energy are used some other form। ठीक है, सब 40% एनर्जी क्या हो गई है, वो हम दोबारा मोमेंटम की टर्म में गेन नहीं कर पाए। जो इनिशियल मोमेंटम था और जो फाइनल मोमेंटम था, ठीक है, उसके अंदर हम क्या नहीं कर पाए। ठीक है, 40% एनर्जी का हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द इम्पैक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। हाउ वी फाइंड दिस वैल्यूज 0.6, 0.4, 0.3 फॉर द डिफरेंट बॉडीज, बाय द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके हम क्या करते हैं, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ए रेस्टिट्यूशन, हाउ मच एनर्जी आर लॉस्ट ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर कंडीशंस इन द पर्टिकुलर सिस्टम। तो perfectly elastic impact is called when the coefficient of restitution value is 1। ठीक है, तब ये E की वैल्यू 1 आ जाए तो हम क्या बोल देते हैं, परफेक्ट इलास्टिक इम्पैक्ट। मतलब कि मटेरियल के अंदर जो भी डिफॉर्मेशन हुआ था दैट विल बी रीगेन ड्यूरिंग द सेकंड फेज, द पीरियड ऑफ रेस्टिट्यूशन के दौरान। रेस्टिट्यूशन का मतलब यही होता है रीगेन करना। ठीक है, तो जब आपके बॉडी ने रीगेन किया अपनी शेप को, तो उसने कंप्लीटली शेप को रिगेन किया, उसकी वजह से कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। सेकंड इज परफेक्टली प्लास्टिक इम्पैक्ट, द वैल्यू E इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, जो बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन हुई वो रिकवर नहीं हुई। ठीक है, उसके एनर्जी का क्या हो गया, 100% लॉस हो गया। दैट इज नोन एज द परफेक्टली प्लास्टिक इम्पैक्ट।